sweats in the middle of the night and flashbacks of you and I in your sweats. How'd you make me feel so nice? Now I'm starting to see this new guy. Hi everyone, namaste, welcome back to my channel, and I am doing this really nice green eye look, and basically I'm using Cuffs and Lashes new palette handy dandy mean greens. So let's get started. So सबसे पहले क्लीन फेस है, मैं प्राइम कर रही हूँ पैक के पोर प्राइमर से, एंड आई एम अप्लाइंग दिस प्राइमर जहाँ जहाँ मुझे ज़्यादा ज़रूरत लगती है, जैसे कि पोर्स पे, ओपन पोर्स पे, अंडर आइज़ पे, स्माइल लाइंस पे, एंड वहाँ लगा के मैं अच्छे से मर्ज कर रही हूँ, इसे अच्छे से मल रही हूँ ताकि जहाँ जहाँ भी क्रीजेस हैं वो फिल इन हो जाएं. Now I'm taking Cuffs and Lashes cover pot in 12 shade. It's a little darker shade, but as I say, dark shades works best to conceal and correct dark areas of your face. So मैं लगा रही हूँ under eyes पे, over the lids, sides of mouth. आप देख सकते हैं कैसे इसने न्यूट्रलाइज सा कर दिया है मेरे फेस को, जबकि ये डार्क शेड है. And I'm just gonna blend it really nicely. And then I'm gonna go over with another cover pot, and the cover pot I'm using is 08 sand, and ये basically मैं use कर रही हूँ as an eye base. So मैं अपने eyelids पे लगा रही हूँ and I'm blending it really nicely. I have really oily eyelids, so मुझे set करना ही पड़ता है अपने eyelid को, चाहे मैं कोई भी product लगाऊँ. So I'm just gonna use PAC Baking Powder Set, और उसमें से मैं ये येलो टोन्ड पाउडर लगा रही हूँ just to set my eye. Now I'm using Cuffs and Lashes handy dandy palette in mean green. बहुत से और भी शेड्स हैं, तो 4 शेड्स आते हैं. बेसिकली मैं यूज़ करूँगी फर्स्ट 3, एंड पहले मैं अपनी क्रीज क्रिएट कर रही हूँ मैक के ब्लश से, प्रिज्म से, because it's more of like a dusty brown, dusty pink brown. So थोड़ा सा डेप्थ दे देगी मेरी आईज़ को, and I'm doing with a fluffy blending brush. आप देख सकते हैं थोड़ा डेप्थ आ गया. Then I'm taking the darker green shade. I know पहले आपको लाइट से शुरू करना चाहिए, but इस पैलेट में मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, सो आई जस्ट राइट अवे वेंट विद द डार्कर ग्रीन शेड, एंड मैं क्रीज पे लगा रही हूँ, इनर कॉर्नर्स पे भी लगा रही हूँ, एंड आई एम बिल्डिंग इट अप विद अ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश. आप देख सकते हैं पिगमेंटेशन अच्छी है, बट बहुत सा फॉल आउट है, लाइक बहुत ज़्यादा फॉल आउट था, एंड ब्लेंडिंग करने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, कहीं से वेयर ऑफ हो रहा था आई शेडो, कहीं ठीक था. सो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा मुझे इस पर्टिकुलर ये वाले शेड के साथ, या बट आई एम जस्ट डूइंग इट ऑन अनदर आई. आउटर कॉर्नर्स पे लगा के, क्रीज पे लगा के, आई एम जस्ट फिलिंग इन द इनर कॉर्नर्स एज वेल एंड बिल्डिंग इट अप. Now I'm taking this lime green eyeshadow from the same palette, और मैं जहाँ जहाँ मैंने lid खाली छोड़ी थी ना, मैं वहाँ पे लगा रही हूँ just right in the center, and I'm also trying to blend in with the darker green. So again थोड़ा सा blending में मुझे दिक्कत लगा, but yeah, I made it work it out. And आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ मैं ब्रश लगा रही हूँ ना, डार्क ग्रीन फेड हो रहा है, so थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल करना पड़ा while using this palette. Before the morning, loving you was a fever dream. I must have been so sick for your touch to be the fix, fell in love. Then I'm going with smaller blending brush again, and I'm depositing the darker green color again and blending it nicely, also blending the edges as well, ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे, इसी वजह से. एंड देन फॉर द ब्राउ बोन्स मैं पैक बेकिंग पाउडर सेट से वाइट पाउडर ले रही हूँ एंड अपने ब्राउ बोन में लगा रही हूँ, एंड आई विल बी ब्लेंडिंग इट रियली नाइसली. आई एम नॉट यूजिंग एनी अनदर आई शेडो palette or eyeshadow, single eyeshadow. I'm just using a translucent powder. Now I'm taking this really nice gold color. I really liked this gold, और मैं अपने फिंगर टिप्स की मदद से इसे सेंटर ऑफ लिड्स पे लगा रही हूँ, जस्ट टू
give that really nice shimmer. और आप देख सकते हैं डार्क ग्रीन फेड हो चुका है मेरे क्रीज से. So I'm just gonna redeposit that as well with a pencil brush and I'm gonna blend it nicely. And I'm gonna do the same with another eye as well. Now I'm taking a smaller blending brush और मैं इसकी मदद से लगा रही हूँ इनर कॉर्नर्स पे सेम आई शेडो जो मैंने लिड्स पे लगाया है. बट इनर कॉर्नर्स पे थोड़ा सा लाइट दिखेगा आपको बिकॉज सेंटर ऑफ लिड्स में नीचे बेस में आई शेडो था बट इनर कॉर्नर्स में नहीं है. एनीवेज आई एम जस्ट क्लीनिंग द फॉल आउट्स जो हुए इस आई शेडो पैलेट में. So yeah, and I'm just gonna blend it everything nicely again. So blending and ये चलता रहता है in between. Now I'm using PAC lashes in M76. मैंने कोई लाइनर नहीं लगाया है. I'm just directly popping the lashes and then I'm just applying mascara, black with a bang from Sugar. Really good mascara. I'm loving this mascara these days. For the face I'm using Huda Beauty 4 Filter Foundation in the shade Amaretti 310 and it's very good match for my skin and it's a neutral undertone, so yeah बहुत अच्छा जाता है मेरी skin पे. And I'm just blending with the PAC 003 foundation brush and थोड़ा सा ये oily skin के लिए है तो थोड़ा सा अगर आपको की dry skin है you need really something oil base आपको चाहिए होगा to blend. Anyways, now I'm just highlighting my under eye area and bridge of nose, Cupid's bow, forehead, chin with European Cosmetic Concealer and the shade I used is Ginger. So now I'm just blending it really nicely. आप देख सकते हैं कैसे इसने brighten up कर दिया है. European concealer are really good. अगर आप budget में concealer देख रहे हैं, they are really good. And I'm just blending it really nicely. Now I'm just gonna bake this concealer with PAC Baking Powder Set. और मैं translucent powder, white powder use कर रही हूँ and I'm applying a little excess because baking में ऐसे ही होता है. Now I'm just filling my eyebrows with European Cosmetics eyebrow palette. Love this palette. My recommendation for sure. And yeah, you can see eyebrows makes difference a lot. Now I'm just gonna do my lower lash line and पहले मैं यही dark green shade लगा रही हूँ, smudge कर रही हूँ lower lash line पे. पूरा नहीं, half of my lower lash line and other half मैं use कर रही हूँ lime green like this. And then I'm gonna take the lime green shade in a small blending brush और मैं smoke it out करूँगी ताकि कोई harsh line ना रहे, एक बहुत ही soft सा gradient look आए. Now I'm gonna remove the excess powder जो मैंने लगाया था for baking and आप इसके लिए कोई भी brush use कर सकते हैं. Now coming on to blush, I'm using two blushes actually. One is MAC blush in the shade Prism और मैं वो एकदम cheek bones पे लगाऊंगी just like this. So जो technique अभी मैं लगा रही हूँ ना, this will give you filter effect जो Instagram पे filters आजकल चल रहे हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल से लगाया है मैंने nose and cheeks पे. And then I'm taking Too Faced blush in I Will Love You Forever and I'm just applying over it. And now for the lips I'm using Sugar Matte Attack lipstick in Caffeine Bandit and I'm just outlining it. आप देख सकते हैं बीच का मैंने खाली छोड़ दिया है, बीच की lips. उसमें मैं लगा रही हूँ My Glam की liquid lipstick in the shade Stashing and I'm just applying with a brush and I'm just gonna blend to make it more matte. I'm just वैसे तो matte ही dry होती है but to make it more matte I just applied some translucent powder and in the end I'm just finishing off with Dewy finishing spray by Miss Clair. And I was actually looking as if I have a filter on but everything was so good, especially I loved the way my skin was looking this day, especially the blush because बिल्कुल filter वाले style में लगाया था मैंने. And yeah, that's it for the look. उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी and you like this video. Give me a thumbs up if you really like this video and don't forget to share and to subscribe. I will see you guys in my next video. Till then, stay beautiful and stay healthy. Bye bye, take care. Mwah.